बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यदिन वसल्लिम। Assalamu alaikum dear students. I am Rabia Umair and I am going to teach you the lesson of GK for class 2. Before starting our lesson, let's see the objectives of the lesson. By the end of the lesson, students will be able to identify the different organs of human body and their functions. इस लेसन के एंड के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकें और उनके फंक्शन को जान सकें. सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ द ह्यूमन बॉडी और द ह्यूमन बॉडी की एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. The human body. We will start our adventure through science with you. So let's look at the human body. The human body. So students, you can see the inner organs of the human body as I have taught you in the previous lesson. You can see the inner organs as brain, eyes, ears, lungs, heart, liver, kidney, stomach. So students, we'll do the exercise of the human body in today's lesson. Fill in the missing words. Your dash grow bigger when you breathe in. Yes students, have you guessed the answer? Yes, it's lungs. Your lungs grow bigger when you breathe in. Your lungs grow bigger when you breathe in. जब हम अंदर सांस लेते हैं तो हमारे lungs थोड़े से bigger हो जाते हैं. Okay, let's see the next. Number 2. Your dash protect other parts of your body. क्या चीज़ है जो body के other parts की protection करती है? Yes, it's bones. Your bones protect other parts of your body. बोन्स जो हैं वो बॉडी के बाकी पार्ट्स की प्रोटेक्शन करती हैं. Number 3. Your dash pumps blood around your body. So what is the answer? Heart. Your heart pumps blood around your body. Heart पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है. Number 4. Your dash sends messages to other parts of your body. So what is the answer? Brain. Very good. Your brain sends messages to other parts of your body. Your brain sends messages to other parts of your body. आपका जो brain है आपकी body के बाकी parts को messages पहुंचाता है. Number 5. Your dash help you move parts of your body. Have you guessed the answer? Yes, students, muscles. Your muscles help you move parts of your body. Your muscles help you move parts of your body. आपके जो muscles हैं आपकी body के parts को हिलाने में help करते हैं. Answer these short questions. Number 1 is, what protects your heart and lungs? क्या चीज़ आपके heart और lungs की protection करती है? And answer is, ribs protect your heart and lungs. Okay students, ribs जो होती हैं, you can see in the picture, ribs protect your heart and lungs. What protects your brain? क्या चीज़ आपके ब्रेन की प्रोटेक्शन करती है? Skull protects your brain. Skull जो है वो ब्रेन की प्रोटेक्शन करती है. Next question. How can you make your muscles strong? आप अपने muscles को कैसे strong बना सकते हैं? We can make our muscles strong by getting enough rest
and eating healthy food. हम अपने मसल्स को हेल्दी फूड खाने से और रेस्ट करने से स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ जॉइंट? जॉइंट क्या है? The place where two bones meet is called a joint. वो जगह जहाँ पे दो bones मिलती हैं वो joint कहलाती है. You can see the picture. What does a moving joint allow you to do? Moving joints आपकी क्या करने में help करते हैं? Moving joints allow you to walk, run, jump and play. Moving joints की मदद से हम चल सकते हैं, भाग सकते हैं, jump कर सकते हैं और play कर सकते हैं. So students, moving joints are very important for us. If our joints cannot move, we cannot do any type of work. Long question answers. Number 1. Are both your lungs the same size? Why not? क्या आपके दोनों lungs same size के हैं? अगर नहीं तो क्यों? Your left lung is smaller than the right lung because your heart has to fix next to it. आपका जो left lung है वो right lung से smaller है. उसकी क्या वजह है? क्योंकि इसके साथ हार्ट फिक्स होता है हमारा. इस वजह से जो लेफ्ट लंग है वो राइट से थोड़ा सा स्मॉल है. What do your lungs look like on the outside? बाहर से आपके जो lungs हैं वो कैसे दिखते हैं? From outside, our lungs look pink and rubbery. बाहर से हमारे lungs पिंक और रबरी नजर आते हैं, जैसे रबर के हों. Number 3. What carries oxygen and other things around your body? क्या चीज़ है जो ऑक्सीजन और दूसरी चीज़ों को आपके बॉडी में लेके जाती है? Blood carries oxygen and other things around your body. ब्लड ऐसी चीज़ है जो ऑक्सीजन को और बाकी चीज़ों को आपकी तमाम बॉडी में लेकर जाती है. Which side of your brain helps you do your homework? आपके ब्रेन की कौन सी साइड है जो आपकी होमवर्क करने में हेल्प करती है? Left side of your brain helps you do your homework. Yes, students, the left side of your brain helps you do your homework. So students, I hope you have understand and solved the whole exercise now. Now I'll suggest your homework. Learn all the questions by heart that I have taught to you people. Okay students, I hope you have understand it. Allah Hafiz, thank you so much.